Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, transportation. Dive in. Who was the first European to travel to Asia and which vehicle do you use while going to school? So are you ready to start the chapter? Let's take a lesson view that what you are going to read in this chapter, what you are going to learn. You will learn about means of transport. Let's start the chapter, bachcho. The invention of wheel has been a blessing for mankind and we see hundreds of vehicles like cars, scooters, buses, bicycles on the roads every day. These are called means of transport. We use different vehicles to travel from one place to another place. यस बच्चों, ये हमारे जाने के, ये हमारे ट्रैवल करने के साधन हैं जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं. सो आप ट्राई करिए कि विच व्हीकल डू यू यूज़ व्हेन यू गो टू स्कूल, यू गो टू लोकल मार्केट, अनदर मार्केट और योर रिलेटिव्स प्लेस इन अनदर सिटी. क्या व्हीकल यूज़ करते हैं आप, मेंशन कीजिए. अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं. The different types of vehicles that we use to travel are means of transport. Different means of transport help people and goods to transport from one place to another, and our choice of transport depends upon how far or near the destination is. It also depends on how much time and money is we can spend or we can afford. Yes बच्चों, कितना टाइम हमें लगेगा जाने में और कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे चूज़ करने पर कि क्या हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम चूज़ करेंगे. फैक्ट फाइल. Walking and later animal transport were the most common methods of traveling for the early man. There are three modes of transport. One is land, another is water, and third one is air transport. Land transport, vehicles by which we travel on land are called land transport. This transport is of two kinds. One is road and another is rail transport. Vehicles like tonga, bullock cart, etc. are driven by animals on road, and these vehicles are used in villages and small towns. In Rajasthan and Gujarat, camels are used as transports. In the hilly regions, mules and ponies are used, and in different parts of the world, animals like elephants, mules, yaks and dogs called huskies and used for transportation. Bicycles, scooters, cars, buses and tractors are used to travel on roads. A network of roads runs across the length and breadth of our country. Bicycles are used to travel to nearby places. We travel by cars to cover long distances within the city, and cars are also used on highways. Highways connect the states by big cities and ports. An expressway is a major highway designed for high speed travel having few or no intersections. बेटा, ये जो हम कार्स वगैरह यूज़ करते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए विद इन सिटी पार्ट जो हमारे सिटी के अंदर है वहाँ के लिए यूज़ करते हैं. और ये कार्स आर ऑल्सो यूज्ड ऑन हाईवेज पे यूज़ की जाती हैं. रेलवेज ऑल्सो टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट and trains run on iron tracks. All major cities are connected through railways. Train carrying passengers is also called passenger train. A good train जो हमारा सामान लेके जाती है that is called goods train in transport goods from one place to another place. Today in big cities like Kolkata, Lucknow, Jaipur and Delhi there are elevated and underground trains called metros. आपने metros देखी है ना बच्चों? Fact file. The Vande Bharat Express is currently the fastest train in India, and India has the second largest road network in the world. Indian railway network has more than 700 railway stations. Let's talk about water transport now. Means of transport, this transport has move on water is called water transport. It is the earliest means of transport. Boats, houseboats, steamers and ships are some means of water transport. Boats and ferries carry people and goods across river and canals. Ships and steamers carry people and goods across the seas. Ships travel on sea routes and dock at places called ports. Fact file. वाटर ट्रांसपोर्ट इज लेस एक्सपेंसिव एंड स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यस बेटा, बहुत
ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, कम पैसे लगते हैं, लेकिन स्लो होता है, बहुत देर से पहुंचाता है आपको। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट हमें जल्दी से बाय एयर हम जल्दी कहीं पहुंच सकते हैं, तो इससे स्लो हो जाते हैं, राइट। Air transport, this transport is the fastest means of transport. We have very fast moving planes which can take us from one part of the world to another within few hours. एक देश से दूसरे देश में भी हमें कुछ ही घंटों में पहुंचा देता है। Aeroplanes and helicopters are means of air transports and had made this world a small place to live in. आपने क्या जर्नी की है एयर ट्रांसपोर्ट में? Okay. So aeroplanes can transport hundreds of passengers on their destination over a short period of time. However, air travel is more expensive than other modes of travel. इसीलिए सब लोग जल्दी से इस ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर पाते बच्चों, बिकॉज ये एक्सपेंसिव होता है। Glossary: vehicles, anything that carries people or things from one place to another place. Pony, a small horse. Mules, the offspring of a donkey and a horse. Metro, an underground train system. Destination, the place one wants to go. Port, a town or a city by the sea where ships arrive and leave. Quick recall बच्चों, that we use vehicles to travel from one place to another, and the different types of vehicles that we use to travel are means of transport. Land transport is of two kinds, road and rail. Train run on iron tracks. Means of transport that move on water is called water transport. Boats and ferries carry people and goods across rivers and canals. Air transport is the fastest means of transport. Aeroplanes can transport hundreds of passengers to their destination over a short period of time. Practice time बच्चों. Tick the correct option. The invention of dash has been a blessing for mankind. Wheel, very good. Do likewise all. Fill in the blanks. Land transport is of two kinds. One is road and another is rail. Very good. Do likewise all. Write T for true and F for false statement. बच्चों आपने सारी statements जो आपने चैप्टर में रीड की हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने चैप्टर से गेन की है, चेक द स्टेटमेंट। आप चेक करें स्टेटमेंट को, अगर आपको गलत लगती है तो आप फॉल्स मेंशन करें F, अगर आपको लगता है वो स्टेटमेंट हमारे चैप्टर से मैच कर रही है तो उसे T मेंशन करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? What are the different modes of transport? ये सब क्वेश्चंस आप आंसर जो लिखेंगे अपनी नोटबुक में लिखिएगा, जो आपने चैप्टर बेस्ड नॉलेज गेन की है उसके बेस पर, कि हमें क्यों ज़रूरत है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट के। लाइकवाइज यू हैव टू डू ऑल। Creative bag, HOTS, what are the advantages and disadvantages of air transport? And subject enrichment, write the name of transport you will use to travel to these places. If you have to visit your friend in the same city, if you have to travel to another city, or if you have to travel to another country, if you have to cross river to reach a place. आप सोचिए, अगर आपको एक रिवर क्रॉस करके जाना है तो ऑब्वियस है कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे? वाटर। अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो आप गाड़ी या ट्रेन या फिर कार से तो नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? एयर ट्रांसपोर्ट। तो लाइकवाइज राइट ऑल। Subject interlinking, what are the solar vehicles? Name one solar operated vehicle. Life, skill and values, we should keep our vehicles clean and we should get them checked timely. ये हमारा सब, ये भी तो हमारे दोस्त होते हैं ना बेटा, जैसे हम अपने दोस्तों की देखभाल करते हैं, इनकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें टाइम पे हर जगह पहुंचाते हैं, हमारी इतनी मदद करते हैं। तो इनको साफ़ सुथरा रखो ताकि हाइजेनिक रहे, हेल्दी रहें आप इसमें बैठ के, और इनको टाइमली इनके डॉक्टर के को दिखाते रहें, क्योंकि जैसे हमारे डॉक्टर होते हैं वैसे इनके भी डॉक्टर होते हैं। तो इनके डॉक्टर्स को टाइमली चेक करवाएं, यानी मैकेनिक्स को, और हैव फन इन योर ट्रैवल सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट मोड। हैव फन, एंजॉय।